In the last class, we are discussing about the concept of the agency under the topic of the Indian Contract Act. Okay. So under section 182, we have discussed the concept of the agent and the principal. Okay. So under the concept of the agent, we have understood that an agent is a person who is employed to do any act for another or to represent another in dealings with the third person. The person for whom such act is done or who is so represented is called the principal. Okay. And under the concept of the agency, under section 182, we have discussed the person for whom the agent works, that person is called the principal. And the person who is appointed to work for the principal is called the agent. Okay. This is the concept we have discussed under section 182 of the Indian Contract Act. Okay. Under section 183, we have discussed that who may employ an agent, that who is the person who can employ an agent, or what should be the criteria or the eligibility of a person who is a principal to appoint an agent. Okay. Under that, we have understood every person which of the age of the majority according to law to which he is subject or which of sound mind may employ an agent. That is what we have understood, that when the person is of his sound mind and the person has attained the age of the majority, then the person is eligible to appoint a person as his agent. That means if I want to appoint someone as my agent, then I must need to take care of the thing that the person to whom I am appointing an agent, that person is of the sound mind, first point, and the second point, the person must have attended the age of the majority according to the law. Okay. So next comes under section 184, who may be the agent. Okay. That means under section 184, we have discussed that when there is a person or the third person may become an agent, but no person who is not at the age of the majority or the sound mind can become an agent, and so as to responsible to his principal according to the provisions and behave herein content. So under section 184, we have understood to become an agent, a person must have a sound mind in nature. That means I should have a stability of the mind. I should have a sound mind, a clear mind that what I am doing to become an agent. So when I am being an agent for my principal, then I need to assure that I am of the sound mind and I have attended the age of the majority. That means according to the Indian law, मेजोरिटी का उम्र कितना होना चाहिए? 18 साल मिनिमम हो जाना चाहिए. तो मुझे इस चीज का एश्योरेंस करना जरूरी है कि मेरा उम्र जो है, मेरा एज जो है, वो पहला बात ये है कि आई एम मोर देन 18 ईयर्स, मैं 18 साल से ज्यादा हूँ. एंड द सेकेंड पॉइंट इज टू बिकम एन एजेंट आई मस्ट हैव द साउंड माइंड. मेरा दिमागी हालत सही होना चाहिए, और दूसरी बात मेरा एज जो है ना वो 18 साल से ज्यादा होना चाहिए. ये दो हो गया आपका who may be an agent. Under section 185, we have discussed consideration is not necessary always. Under that, we have understood to become an agent, the consideration is not always been necessary. That means if I am appointing you as an agent, that is not always mandatory that I must pay you some amount of the consideration. Consideration usually being given in the mode of the business. That means when there is any kind of the business or deal is being taken care of, at that specific place, the consideration takes an important part. Okay. But when I'm talking about with the agency, that means when the principal is appointing someone for a specific kind of the work. For example, I am the principal over here
and I am appointing you to do a certain kind of the work. Okay. So in that circumstances, each consideration is necessary. The answer is no. When we have discussed about the concept of the selling and the buying, सामान बेचना और खरीदना, जब हम इस कंसेप्ट पे बात कर रहे थे, at that point of time we have already discussed that when there is a sale, the sale must need to be associated with a amount of the consideration. अगर वहां पे कंसिडरेशन नहीं है तो उस चीज को एक वैलिड सेल नहीं बोला जा सकता. So to make a sale valid, there must be the presence of the consideration over there. ये तो हमने पहले से डिस्कस कर चुके हैं. दूसरा, when we are talking about the agency, in the concept of the agency, the concept of the consideration is not always mandatory. बिकॉज जहाँ पे एजेंसी का बात आता है, जहाँ पे एक एजेंट का बात आता है, वहां पे क्या होता है ना, वहां पे आपका कंसिडरेशन ना मैंडेटरी नहीं बनता है, बिकॉज एजेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल. इनफैक्ट एजेंट ऑलवेज वर्क फॉर द प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल का जो जो राइट्स रहता है टू इम्प्लाई और टू यूटिलाइज, the agent pursues all the rights. प्रिंसिपल का जितना सारा राइट बनता है, जितना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है यूटिलाइज करने का, एजेंट का भी उतना राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. So whenever we are talking about the agency, then we need to understand that no consideration is necessary to create an agency. एक एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन का रहना इम्पोर्टेंट नहीं है. कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी. ओके. देन कम सेक्शन 186. It speaks the agent's authority may be expressed or implied. What does it mean? The authority of an agent may be expressed in nature or implied in nature. What does it mean? When there is an agent and the agent is having his authority, then it must be expressed in nature or implied in nature. Expressed means it is expressed by the words or by the words or by the written format, by the document. And when we are talking about the implied agency, that means the implied action is being implied by the activity of the agent. वहां पे बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है, वहां पे रिटन फॉर्मेट का कोई जरूरत ना है. The action of the agent is being reflected through the action of the party. That is called the implied authority. That means, for example, I am going somewhere and you are appointing me as your agent. So I have been the implied authority over your things because you are my principal over there. For example, you are supposed to attend a meeting, but you are unable to go to the meeting specially. So what you are doing? You are appointing me and you are telling me, see, I am unable to go, so do one thing on my behalf. Please you go and attend the meeting. I said, okay, I am going to the meeting. So when I went to the place of the meeting, when I am attending the meeting, what I became? You became the principal over here and I became your agent who is following your instructions to do something. Got it? So when we're talking about the implied authority of the agent, whenever I am going to the meeting, I don't need to tell everyone that yes, I have come on behalf of this person or I have come on behalf of that person. I do not need to amplify the thing, but my action shows that I am going to the meeting place
I am being present at the meeting place. I am doing my course of the business. I am attending the meeting. I am talking to the people. And yes, I am signing the deal. And most importantly, I am using your iCard to do all these activities. And this is permitted by you before ahead. So here, this is an example of the implied agency, जहाँ पे my activities are clarifying my intention that I am becoming your agent, and on behalf of you, I am acting for this all the I am acting on behalf of you for all these activities, for this task or for this work. So hereby, this is called the implied agency. Got it? Under section 187, we'll understand the we have understood the definition of the implied or the expressed agency. Then 188 it speaks about the extents of the agent's authority. So whenever we're talking about the extent of the agent's authority, then what does it mean? An agent having an authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act. So it specially implies under section 188 when an agent have an authority to do an act, then he has the authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act. For example, if I am the agent of yours, okay? So you have instructed me to buy certain goods for your company. So I am going to that specific place. I am entering the agreement with that person with your name. I am signing the document. I am buying the things. I am using your credit card and disposing the money for the purpose of buying the thing. So when I am doing all these activities as your agent, then these are the legal activities with the course of the action. That means to complete your transaction, to complete the buying of the things or buying of the goods for your company, I have to act accordingly. आपका कंपनी के लिए यहाँ पे सामान खरीदना है एंड आपके लिए सामान खरीदने के लिए आई एम एक्टिंग एज योर एजेंट एंड फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू आई हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट इज गिवन बाय यू. जैसे कि आप अगर यहाँ पे आते, आप जितना सारा स्टेप्स फॉलो करते, वो सारा स्टेप्स मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ टू कंप्लीट योर टास्क. That is called the concept of the agency. And so when I am authorizing my power of the agency in this specific place to complete your work, that is valid and relevant. And one more thing, the act of the agent to complete the task of the principal or the work of the principal must be relevant in nature, must be lawful in nature. इसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर. तो यहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो मैम आप बोल रहे हैं कि when there is the appointment of an agent for a course of action, during the course of action to do a certain act, वो जितना सारा काम कर रहा है ना, वो सारा काम वैलिड है, बट दैट शुड बी out of any kind of the pressure, out of the fraud, misrepresentation, and mostly those activities must be legal in nature. उसका क्या कंसेप्ट है, चलो ये बात भी आपको समझा देती हूँ. When I am talking about the legal activity, for example, आप मेरे को 10 kg का चावल खरीदने के लिए भेजे हो. 10 kg का चावल, 10 kg का दाल, बहुत सारा सामान आपको खरीदना है. And you have appointed me as an agent to buy the specific goods. Okay? तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आया दुकान से, मैंने बोला कि ठीक है मुझे ये सारा सामान दे दो. ओके, सो दुकानदार ने क्या किया,
मतलब from whom I am buying the things for you, he cheated on me, he did the fraud with me, okay, वो मेरे साथ गलत किया, तो वहां पे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है? To inform the police if there is any kind of the big fraud has happened with me, or to create an allegation in the consumer court that मैं ये सामान खरीदने के लिए आया था, यहाँ पे मेरे साथ कोई गलत हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है करके। सो यहाँ पे एज एन एजेंट, अगर प्रिंसिपल के हिसाब से आप यहाँ पे खुद होते, तो आप जितना सारा स्टेप्स फॉलो करते, आप जो जो भी एक्टिविटी करते, वो सारा एक्टिविटी करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है, तो मैं जरूर करूंगी। अगर सामान मेरे को अच्छी तरीके से मिल जाता है तो अच्छी बात है, बट अगर सामान मेरे को नहीं मिलता है, देन आई कैन इन्वॉल्व द पुलिस इन इट, आई कैन फाइल ए कंप्लेन इन द कंज्यूमर कोर्ट, या फिर आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग दिस मिसकम्युनिकेशन, ओके। बट यहाँ पे मेरे को क्या हुआ ना, मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने क्या किया, वो जो दुकानदार है उसको गुस्से में गन दिखाया, धमकाया उसको कि चुपचाप आप अच्छा सामान दे दो, नहीं तो मैं आपको गोली मार दूंगी। सो टेल मी, इज इट ए लीगल एक्टिविटी? नहीं। भले ही दुकानदार ने मेरे साथ गलत किया हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि उस गलती के बदले मैं भी दूसरा गलती करूंगी, या मैं उसको डरा धमका के उससे सामान ले लूंगी, या फिर मैं उसको गोली मार दूंगी। दिस काइंड ऑफ द एक्टिविटीज आर कॉल्ड इलीगल एक्टिविटीज। ये सारी चीजें जो मैं कर रही हूँ ना, वो इलीगल इन नेचर है, उसी का कोई लीगल वैलिडिटी है ही नहीं। ऐसा काम नहीं करनी चाहिए, बट यहाँ पे मैं कर रही हूँ। मैं जबरदस्ती उसको डरा रही हूँ, धमका रही हूँ कि आप ये काम कर दो, नहीं तो आई एम गोइंग टू किल यू, आई एम गोइंग टू शूट यू। सो टेल मी, is this called as a valid agency? The answer is no. So यहाँ पे अगर एजेंट on behalf of the principal काम कर रहा है या कर रही है, तो जो जो काम प्रिंसिपल के तरफ से on behalf of the principal the agent is acting, that task or that work should be relevant in nature, should be lawful in nature। वो किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। दिस इज provided under section 188, which implies a very very important provision. The second part of section 188 speaks an agent having an authority to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in course of conducting such business. So, under section 188, it speaks about the agent's authority. And under that, we have understood that when an agent has an authority to carry a business, then he has the authority to carry the lawful activities to complete the course of the business. To complete the activities of the business, all the necessary acts, all the necessary course of action which need to be done through the time period, the person is liable to do that. And most importantly, the agent must follow the specific time duration to perform the act by himself. दैट मीन्स अगर मेरे को यहाँ पे कोई काम 10 दिन के अंदर खत्म करने के लिए बोला गया है, तो मैं उस काम को आज इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रिंसिपल have to complete in between the duration of the 10 days only, and that too in a legal manner. अगर नहीं हो रहा है, if I'm unable to do that, then I have the responsibility and I have the capability to inform my principal regarding the issue. अगर मेरे को दिक्कत हो रहा है तो मैं प्रिंसिपल को बता सकती हूँ कि देखो मेरे को ये दिक्कत हो रहा है, तो मैं टाइम पे काम खत्म नहीं कर पा रही हूँ। आई हैव द राइट टू डू दैट, बट इंस्टेड ऑफ utilizing my responsibility or instead of utilizing my rights, what I am doing,
if I am using any kind of the unlawful way to complete the task, for example 10 दिन के अंदर काम होना था, मैं क्या कर रही हूँ ना, इलीगल तरीके से काम को 5 दिन के अंदर खत्म करने का कोशिश कर रही हूँ. द way the procedure I am following, that is illegal in nature. So tell me, is it valid? Is it authenticate? The answer is no. This is not valid. This is not authenticate in nature. Okay. So whenever we are talking about the agent's authority in an emergency, agent's authority or extents of agent's authority, that means the authority of the agent must be implied, must be utilized in a lawful manner, and that must be followed up within the lawful time period itself. Then comes section 189. This speaks about the agent's authority in an emergency. That indicates that what is the authority of an agent in an emergency. इमरजेंसी केस पे एजेंट का अथॉरिटी क्या है? That is defined under section 189. Okay, and what does it speak? An agent has the authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. What does it mean? An agent has the authority in an emergency for the purpose of protecting the principal from the loss as would be done by the ordinary prudence in his own case under the similar circumstances. That means if there is a situation of the emergency in front of an agent and the agent is seeing that it is very very important to protect the principal from this danger or to protect the business of the principal from this danger. For example, I am acting on behalf of you for a specific task or for a specific draft. Okay. So I am seeing that as the situation demands over here, there is a situation where I have to take a drastic step to withdraw the amount of 1 lakh rupees from the account of the company and to pay someone. There is a strike is going on, and in that I have to pay the compensation up to 1 lakh to a specific person which you were supposed to do. But here I am working as the agent of yours. एक हिंदी में समझाती हूँ. For example, आपका एक कंपनी है. यू हैव अपॉइंटेड मी एज योर एजेंट. आप मेरे को अपने एजेंट के हिसाब से अपॉइंट कर चुके हो. सो आई एम वर्किंग फॉर होम? आई एम वर्किंग फॉर यू एज योर एजेंट. सो इन द कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होता है कि देर इज ए स्ट्राइक इन द कंपनी. ओके, एंड एज एन एजेंट ऑफ योर्स आई एम वर्किंग फॉर द कंपनी. ओके, ऑन योर बिहाफ एज द प्रिंसिपल. आप यहाँ पे नहीं हो, बट एज द हेड ऑफ द कंपनी आई एम वर्किंग फॉर ए टेम्पररी पीरियड बिकॉज आप मेरे को अपने जगह अपॉइंट करके गए हो कहीं बाहर. उसी बीच में कंपनी में एक बड़ी किस्म का स्ट्राइक हो रहा है. देयर इज अ वेरी बिग स्ट्राइक इन द कंपनी व्हिच इज जस्ट मिसबैलेंसिंग द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी का रेपुटेशन जो है, कंपनी का बैलेंस जो है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस जो है, वो सारा डूब रहा है मेरे आंखों के सामने. तो देयर इज ए ओए कि अगर मैं 3 लाख रुपया किसी को कॉम्पेंसेट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, देर इज ए लेबर ऑफ आवर कंपनी. कंपनी का एक लेबर है जिसी का डेथ हो गया है. तो उसी को 3 लाख का कॉम्पेंसेशन देने के लिए यहाँ पे इतना बड़ा स्ट्राइक हो रहा है, which is harming the reputation of the company, and the situation is an emergency situation. एंड यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि मैं चाह के भी आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ एंड मैं चाहते हुए भी आपका परमिशन नहीं ले पा रही हूँ. सो देयर इज द ओनली सॉल्यूशन व्हाट आई कैन सी
मेरे को अगर इस चीज से निकलने का एक ही रास्ता दिख रहा है तो कंपनी का जो बजट है, कंपनी का जो फाइनेंस है, जो अकाउंट है, वहां से 3 लाख रुपया विड्रॉ करके कंपेंसेशन पे करने से ही ये सिचुएशन शांत होगा, ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगा। मेरे को यही रास्ता दिख रहा है। सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, विदाउट योर परमिशन, मैंने क्या किया, 3 लाख रुपया विड्रॉ किया एंड वो 3 लाख रुपया मैंने कंपेंसेशन के तौर पे पेमेंट कर दिया। सो टेल मी, am I responsible for this kind of the activity which I have done without your permission? The answer is no, because this was an act of the emergency to protect you. यहाँ पे मैंने जो कुछ भी किया आपका रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको ही बचाने के लिए किया। And the thing or the activities I did, that was the act of the emergency to protect you. So यहाँ पे this will not be considered as an unauthorized activity. यहाँ पे if you have made me an agent on behalf of yourself, if I am acting or doing anything to protect you or to protect your business or to protect your work, and that is being done according to the demand of the situation itself, then that will be called as a valid action. Got it? Next आता है section 190. What speaks it? When agent cannot delegate. Okay, what does it mean? Section 190 speaks about that when agent cannot delegate. That means the agency, when it cannot be transferred to another person. We have discussed it in the last class that when there is a term and condition of the contract that the agent is allowed to appoint someone as the sub-agent, then in that situation only the sub-agent can be appointed. But if the situation does not demand so and the agent is not permitted to appoint someone as the sub-agent, then in that circumstances the sub-agent cannot be appointed. And under section 191 we have discussed who is a sub-agent, that a person or a agent who is appointed by the agent. जैसे कि प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है, वैसे ही एजेंट जिसको अपने काम के लिए अपॉइंट करता है उसको हम बोलते हैं सब एजेंट। ये हमने डिस्कस कर चुका था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट द प्रिंसिपल is liable or responsible for the activity of the sub agent if the nature of the contract says so. अगर कॉन्ट्रैक्ट के नेचर के हिसाब से, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से एजेंट का ये अथॉरिटी है, ये लायबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अपॉइंट समवन एज द सब एजेंट, देन द प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द सब एजेंट। एंड उसी का सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था that as agent has appointed the sub agent, then agent will be answerable to the principal for the activities of the sub agent. And third में हमने पढ़ा था the sub agent will be responsible for his act to the agent. सब एजेंट अपना सारा एक्टिविटी के लिए किसी के पास रेस्पॉन्सिबल होगा। The sub agent will be responsible to the agent, okay, not to the principal. But in the case of the willful wrong or fraud, जहाँ पे सब एजेंट जानबूझ के कोई गलती कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई मिस्टेक कर रहा है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, so in that circumstances the sub agent is answerable to the principal itself. Then under section 193 we have discussed agent responsibility for sub agent appointed without authority, and under section 193 I have made you understand when the sub agent has been appointed without the permission of the agent. यहाँ पे
एजेंट जो विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल, that means the nature of the contract is not permitting the appointment of an agent. कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से एजेंट का कोई अथॉरिटी नहीं है टू अपॉइंट ए सब एजेंट, बट उसी के अलावा भी, उसी के बावजूद भी ही अपॉइंट समवन एज ए सब एजेंट. He has breached the terms and conditions of the contract. So at these circumstances, at this condition, the sub-agent is responsible for his activities to the agent, and the principal is not liable for the activities of the sub-agent. जैसे कि for example, I have a shop at कटक. मेरा कटक में एक शॉप है. I am appointing you as my caretaker of the shop. मैंने आपको वहां पे शॉप का केयर टेकिंग के लिए अपॉइंट कर रही हूँ. ओके, so what you are doing, you are taking care of my shop, you are doing the course of the business in my shop, but what is happening that during the course of the business you are appointing a person as the sub agent. आप अपने अंडर एक दूसरा इंसान को आज योर एजेंट अपॉइंट करते हो, जिसको हम बोलते हैं सब एजेंट. ओके, तो व्हेन देयर इज अ थर्ड पर्सन इज अपॉइंटेड एज द सब एजेंट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको ये बोला था कि आई एम अपॉइंटिंग एज द केयर टेकर एज माई एजेंट, बट आप तीसरे किसी इंसान को सब एजेंट के हिसाब से अपॉइंट नहीं कर सकते. बट यहाँ पे यू आर नॉट फॉलोइंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू आर अपॉइंटिंग द पर्सन एज द सब एजेंट. मान लो that person has done the act of the theft in which he has taken 3 lakh of the rupees from the shop and ran away. उसने अपने किसी को एज अ सब एजेंट अपॉइंट किया था, उसने क्या किया, 3 लाख रुपया दुकान से चुरा के भाग गया. So tell me, am I responsible for this act anymore? The answer is no. क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको किसी को एज ए सब एजेंट अपॉइंट करने के लिए परमिशन नहीं दी थी, वो आप खुद से अपने मन से की थी विदाउट फॉलोइंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो हियर अगर यहाँ पे मेरा 3 लाख का नुकसान हुआ है ड्यू टू द सब एजेंट, देन यू आर रेस्पॉन्सिबल टू पे मी दैट कॉम्पेंसेशन ऑफ 3 लाख ऑफ द रुपीज. वो 3 लाख का नुकसान के लिए मैं लायबल नहीं हूँ. एज एन एजेंट आपको ही उसका भरपाई करना पड़ेगा, क्योंकि दैट हैज डन विद द course of action of the sub-agent for whom I am not responsible. Clear? Then comes section 194. It speaks about the appointment of the another agent. If an agent is authorized to appoint someone to act on behalf of the principal, the appointment directly represents the principal, not a sub-agent. Okay? That means, for example, the principal has permitted the agent to appoint someone. Okay, so in that specific place, when the agent with the order of the principal or on behalf of the principal, then the appointment directly, then the appointee directly represents the principal, not a sub agent. That means in that circumstances, the person who is been appointed acts as the agent to the principal only, not as a sub agent. That means I'm giving you an example of this. For example, I'm having a shop at Delhi. You are taking care of my shop over there. You are working as my agent for the shop, but the task of the shop is being very difficult. So what I am suggesting you that see, you are unable to take care of the shop alone. So please appoint someone, someone for the treasury work of the shop. So you are appointing another person on my behalf for the work of the shop. That person you are appointing has been appointed to handle any other task of the any other work of the shop, and he is been appointed on behalf of me by you. आपने उसी को अपॉइंट किया है, बट मैंने आपको बोला था कि आप और किसी को दुकान का काम के लिए अपॉइंट किए हो, but that person is not appointed under you.
वो आपके अंडर अपॉइंट नहीं हुआ है. He is not your agent. He is appointed for me by you. So that person will work as my agent, not as a sub agent. अगर उसी को मैं दुकान का ट्रेजरी का काम करने के लिए रखती हूँ, सो दैट पर्सन विल ऑल्सो एक्ट माई एजेंट. जैसे आप मेरा एजेंट हो, वो भी मेरा एजेंट रहेगा. अगर मैं आपको बोलती कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आप दुकान का फाइनेंशियल का हिसाब संभाल रहे हो, आपसे नहीं संभाला जा रहा है, तो अपॉइंट समवन अंडर यू टू कैरी द वर्क. So in that circumstances, that person will be called as the sub agent. अगर वो आपका काम में आपको हेल्प कर रहा है, then that person is called the sub agent, जो कि as your agent काम कर रहा है. एजेंट का एजेंट क्या बोला जाएगा? सब एजेंट बोला जाएगा. बट यहाँ पे आप अपॉइंट कर रहे हो बट दुकान का दूसरा काम के लिए. दैट पर्सन इज नॉट वर्किंग अंडर यू. दैट पर्सन इज डायरेक्टली वर्किंग अंडर मी बट जस्ट अपॉइंटेड बाय यू. So that person will be called an agent, not the sub agent. समझ में आ गया? तो ये हो गया सेक्शन 194. 195 speaks that the agent must act with reasonable care in appointing another agent. If chosen prudently, the agent is not liable for the appointee's negligence. जैसे कि मैंने बताया था, अगर एजेंट जो है वो अपने मन से कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, he has not been permitted to do that activity. फॉर एग्जाम्पल, किसी सब एजेंट का अपॉइंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको नहीं दिया गया है. He is not allowed to keep someone as the sub agent, but still he chooses to do so. Still उसने क्या करता है, किसी को एज ए सब एजेंट अपॉइंट कर लेता है. So tell me, अगर यहाँ पे सब एजेंट किसी भी तरह का गलत काम करता है, then who is responsible for that? The agent only. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि अगर उसी सब एजेंट ने, जो कि बिना मेरा परमिशन पे अपॉइंट किया गया है, अगर उसी ने 3 लाख रुपए चोरी करके भाग जाता है, तो उसका भरपाई किसको करना पड़ेगा? एजेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल का कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. इट हैज नॉट डन विद द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल. बट कमिंग टू द सेकेंड सर्कमस्टेंसेस, जो कि अभी अभी मैंने बोला, जैसे कि मैंने आपको बोला है टू अपॉइंट समवन एज अनदर एजेंट. जैसे कि आप मेरा एजेंट के हिसाब से काम कर रहे हो एंड मैंने आपको बोला है कि दूसरा किसी को अपॉइंट करो फॉर एनी अदर वर्क और फॉर द सेम वर्क. आपसे अकेला संभाला नहीं जा रहा है, वो पर्सन भी, वो इंसान भी मेरे अंडर काम करेगा एज एन एजेंट. वो आपके अंडर काम नहीं करेगा, वो मेरे अंडर एज एन एजेंट काम करेगा. सो अपॉइंट हिम एज द एजेंट. So you are appointing some other person as the agent. So in that activity, if that another agent is doing any fault, then who will be responsible? The principal will be responsible. I will be responsible. अगर यहाँ पे वो आपके अंडर काम कर रहा होता, if he would be a sub agent, then उसका एक्टिविटी के लिए you would be responsible. बट यहाँ पे वो मेरे अंडर डायरेक्टली काम कर रहा है, जबकि अपॉइंटमेंट बस आपने किए हो. सो हियर व्हेन द पर्सन इज डायरेक्टली अपॉइंटेड एज एन एजेंट बाय यू वर्किंग अंडर मी, you have to take care of this and you have to do the work carefully. You have to see that कि आप जो एजेंट को अपॉइंट कर रहे हो वो मेंटली साउंड है कि नहीं, वो मेजर है कि नहीं, ये सारे टेक you have to be conscious for all these things because you are my agent. मैंने आपको कोई टास्क दिया है to appoint another agent, so you have to take all the reasonable care to appoint another person. बट अगर सारे रिजनेबल केयर लेने के बाद भी दैट पर्सन डज एनी मिस्टेक, दैट पर्सन डज एनी फ्रॉड, दैट पर्सन डज एनी इलीगल एक्टिविटी, देन द प्रिंसिपल, दैट मीन्स the person who is the main authority will be liable or responsible for all these acts, not the agent. अगर एजेंट ने दूसरे एजेंट को अपॉइंट करने में अपना सारा रीजनेबल केयर ले चुका है बट उसके बाद भी वो दूसरा एजेंट किसी भी तरह का गलत काम करता है, देन इन दिस मैटर
The principal will be responsible for the activity of the another agent. So this is explained under section 195. From section 196 onwards, we are going to discuss in the next class, which speaks about the ratification. So what is ratification? How the ratification works in the concept of the agency, that we are going to discuss in the last class. This is all for today, guys. Wrapping the class over here. Thank you. Bye bye. Take care.